Let's have the code of selection sort algorithm. We'll see how we can write the algorithmic part. How can we convert it into the coding? So here I have given you the header file, that is basic standard input output library, and now I'm going to start to write the main function. So as the first step is variable declaration, so we want to store the data elements in array, so that's why I. Nested loop we require, that's why j will also be required over here. We'll take the size of array n, as well as we would like to find out the minimum value, and for the swapping purpose we need one more variable, that is temp over here. Great. And now if see one more requirement, we have to declaration of array, but before going off declaration of array, we'd like to take the size of array, so that's why enter the size of array. That would be great. And okay, with this scanf function, we'll take percentage of d. Fine. So it will take the size of array. Now we'll declare the array with size n. It will consist the integer elements. Now shall we enter the elements into array? Enter the elements in array. Okay, how many number of elements we would like to enter, so that's why percentage of d I have written over here. And so in place of this percentage of d, I require this n over here, so that will show you good reflection how many number of elements actually you want to store. This information it will provide you. Now we'll start the for loop. I equals to 0 to I less than n and I plus plus. Then scanf function, we want to enter all the elements. I hope you understood why I have not written the open braces and close braces here, because only one single statement I would like to write. So percent ampersand and array. Here each and every time it will store only one single element, and that is the index position would be I. Okay, now all the elements has been stored. Now what is our task? Our task is to start the selection sort operation. So once again we'll require one for loop. For I will start from 0 and until n minus 1, because see I वो वैल्यू है जो पहले एलिमेंट को जिसको मिनिमम मानती है, तो इट मीन्स हमारा लास्ट एलिमेंट ऑलरेडी सॉर्टेड ही होगा, तो दैट्स वाई क्या है आई को हम n माइनस 1 तक चलाएंगे। n माइनस 1 एलिमेंट यानी जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है उसके एक एलिमेंट पहले तक, सेकंड लास्ट एलिमेंट तक, एंड आई प्लस प्लस. So here I'll assign minimum as I, and once again one more loop we require, that is for j. J will start from I plus 1 as per the algorithm. I hope you have gone through with the algorithm earlier. And j less than n, j plus plus. Here I'll check if yes a of min, जिसको हमने मिन कंसीडर किया था, अगर वो ग्रेटर देन है ए ऑफ जे के, इट मीन्स अब वो मिनिमम नहीं होगा, तो दैट्स वाई हम अब मिनिमम एलिमेंट जे को कंसीडर कर लेंगे। और जब तक ये इनर आर और फॉर लूप रन होगा, तो एवरी टाइम ये पूरे के पूरे एलिमेंट में चेक करके ये बता देगा कि कौन सा मिनिमम एलिमेंट है। अब हम चेक करेंगे, अगर हमारा मिन इज नॉट इक्वल्स टू आई, इट मीन्स चेंज हुए हैं, कुछ चेंजेस परफॉर्म हुए हैं,
तो ऐसी सिचुएशन में हमें इसको चेंज कर देना है और एरे ऑफ आई एलिमेंट को हम टेम्परेरी वेरिएबल में रखेंगे। एरे ऑफ आई में हम एरे ऑफ मिन को स्टोर करेंगे एंड एरे ऑफ मिन में अब टेम्परेरी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आ जाएगी। इस तरीके से स्वैपिंग कंप्लीट हो जाएगी। It has swapped all the element, and finally once this for loop will be over, so we'll have all the sorted elements, so that's why print elements after selection sort are okay. For loop I'll write I equals to 0, I less than n, I plus plus, and we'll print all the elements percentage of d slash t tab separated, and elements are stored in I. Okay, so it will print. Okay, here I have to write printf. It will print all the element. Finally get ch, and let me see whether it was integer in main. Yes, it was in main. That's why return 0. Okay, so एक बार हम इसको रिव्यू कर लेते हैं। हमने एन की वैल्यू इंटर करा ली, डिक्लेरेशन कर लिया, देन एरे एलिमेंट्स की हमने एंट्री करा ली, सारे के सारे एरे एलिमेंट्स इंटर हो गए। देन आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एन माइनस 1 तक हमने इसे रन किया। देन मिन को हमने आई वेरिएबल जे की वैल्यू आई प्लस 1 से स्टार्ट होकर लेस देन एन तक। देन एरे ऑफ मिन अगर एक ग्रेटर देन है एरे ऑफ जे से, तो मिन अब हमारा जे हो गया। एंड अगर मिन इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू आई है तो हमने दोनों की स्वैपिंग कर दी। एंड फाइनली दिस। ओके, so let's run this code, enter the size. Let's suppose that 5 element I am taking, 3 2 1 4 5, and all elements are sorted here. So you have seen our algorithm is working perfectly. So hope you understood how the selection sort algorithm works.